Hello children, I am Poonam Bagga and today we are going to start a new chapter, chapter 7, Cubes and Cube Roots. In the first part of the chapter, we will be studying about cubes and in the later part, we will be studying about cube roots. So today we are going to deal with cubes or cube numbers. What are cube numbers? Numbers obtained when a number is multiplied by itself 3 times are known as cube numbers. For example, 1, 8, 27, all these are cube numbers. Now how are we getting these numbers? Just have a look. If we multiply 1 by itself 3 times, 1 into 1 into 1, what do we get? We will get it equal to 1. If we multiply 2 by itself 3 times, 2 into 2 into 2, 2 को हम 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8. So we are getting these numbers 1 and 8 when we multiply a number by itself 3 times. Similarly, if we multiply 3 by itself 3 times, we will get 3 3s are 9, 9 3s are 27. So here again we are getting this 27 when we multiply 3 by itself 3 times. So these numbers 1, 8, 27, these numbers are called cube numbers, or we also call these numbers as perfect cubes. Why are these called as perfect cubes? Because we are getting these numbers when we multiply a number by itself 3 times. And since we are multiplying a number by itself 3 times, we can also denote it in this form, 1 raised to power 3. 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर यहाँ पर लग जाएगी 3. इसी तरह से this can be represented as 2 raised to power 3 and this one can be written as 3 raised to power 3. At this point, let us recall how we got the square numbers. अगर हम 3 को 3 से ही 2 times multiply करें तो हम इसे कैसे represent कर रहे थे? We represent it as 3 raised to power 2 and this is equal to 9. This is a square number जहाँ हम एक नंबर को उसी से 2 times multiply कर रहे थे. और cube numbers में हमें क्या मिल रहा है? When we multiply a number by itself 3 times. So this is the difference between a square number and a cube number. So now if we want to find 4 raised to power 3, ये कैसे मिलेगा हमें? क्योंकि पावर 3 है, इसका मतलब हमें 4 को 4 से ही कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स. So we get 4 into 4 into 4 and you will get it 4 4s are 16, 16 4s are 64. So this is again a perfect cube or we call it a cube number. So I hope it is clear to you. Similarly, we can find the cubes of other numbers also. Here we have 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64. Similarly, 5 cube कैसे मिलेगा हमें? If we multiply 5 by itself 3 times, this will be equal to 125. Similarly, 6 cube, it will be obtained when we multiply 6 by itself 3 times and this will be equal to 216. Similarly, we can get 7 cube and it is equal to 343. 8 cube, we can multiply 8 by 8 3 times and we will get it equal to 512. Similarly, 9 cube is 729 and 10 cube, 10 multiplied by 10 multiplied by 10. Here we are having 3 zeros and in the end 10 cube is equal to 1000. So these are the cubes and these cubes should be very much learned to you because these will be frequently used in many calculations. तो इन्हें आप अच्छी तरह याद कर लीजिए. Again let us repeat. 1 cube is 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000. So learn these very well. Next we have the shape cubes.
solid figures. By solid figures we mean that there are 3 dimensions: length, breadth and height as well. So we have these cubes with us, and how these cubes are related to the cube numbers that we are studying. Just look at this cube of side 1 centimeter. ये एक क्यूब है जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, और अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालें, so how we will get it? It will be equal to 1 into 1 into 1. 1 is the length, 1 is the breadth and 1 is the height also. तो ये हमें मिल जाएगा equal to 1. This is nothing but 1 cube. So we get the volume of a cube in the form of a cube number, as you can see. Similarly, if we take a cube of side 2 centimeters, then what will be its volume? It will be given by 2 into 2 into 2, and this will be equal to 8 cubic units. और अगर आप एक 2 centimeters का क्यूब बनाना चाहें using a cube of side 1 centimeter, then how many cubes will be required? अगर हम 1 centimeter साइड के क्यूब को यूज़ करते हुए बार बार उन्हें मिलाते हुए एक क्यूब बनाना चाहें जिसकी साइड हो 2 सेंटीमीटर्स, तो ऐसे कितने क्यूब्स लगेंगे जिनकी साइड 1 हो? और आप देखेंगे you will be taking 8 cubes. This is the first one, this is the second one, this is the third one, this is the fourth, this is the fifth, this is the sixth, this is the seventh, and one you can imagine it will be below this 7th block and behind this first block. You can imagine it. So we are using 8 small cubes to form a cube of side 2 centimeters. So this is again one relation between the cube number 8 and a cube of side 2 centimeters. इसी तरह से अगर हम एक क्यूब बनाना चाहें जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर्स और हम यूज़ कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स, तो ऐसे कितने क्यूब्स हमें यूज़ करने होंगे? और आप काउंट करेंगे तो देखेंगे वी विल नीड 27 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. And how we get this 27? Yes, it is a cube number and we get it when we multiply 3 by itself 3 times, and it is equal to 3 cube, and this is equal to 27. So you can see a connection between the cube shape and the cube numbers. Now we have some properties of cube numbers. First one, cubes of all even natural numbers are even, and cubes of all odd natural numbers are odd. Let us go back at this table. यहाँ देखिए आप, ये 1 it is an odd number, और इसका cube again it is odd and it is ending with 1. Similarly 3 is an odd number and its cube it is ending with 7 and it is again an odd number. Take this odd number 5 और इसका cube 125, it is again odd. Similarly 7 is an odd number and its cube is again an odd number. 9 is also odd, its cube is also odd. And let us have a look at the ones place digit in these cubes. 1 has its cube ending with 1 itself. 3 जो है उसका क्यूब 7 पे एंड हो रहा है और 7 का क्यूब 3 पर एंड हो रहा है. So this is interesting to see. 5 cube is ending with 5 and 9 cube is ending with 9. So 1 cube is ending with 1, 5 cube ends with 5, 9 cube ends with 9, but 3 cube ends with 7 and 7 cube ends with 3. So this is interesting. Also have a look, this 2, it is an even number and its cube is also even, 8. Similarly 4 is even number and its cube is also even, 64. Here 6 is also even number and its cube is also even, 216. And similarly 8 is even, 10 is even, and their cubes are also even numbers. And let us again look at the ones place digit. Here we have 2 and its cube ends at 8, and similarly we have here number 8 and its cube ends at 2. So they are interchanging. Next, 4 cube ends at 4 and 6 cube ends at 6, and 10 ending with 0 has a cube ending with 0. So here 2 cube ends with 8 and 8 cube ends with 2.
Again, this is interesting to see. Next, we look at other properties. Cubes of negative integers are negative. Just have a look. If we find -6 cube, this is a negative integer, और अगर हम इसका क्यूब निकालना चाहें तो कैसे मिलेगा? We will multiply -6 by itself 3 times, and you will see that this minus and this minus together become plus, and this plus and this minus will result in a minus, and so -6 cube will be equal to -216. When we multiply 6 by itself 3 times, 6 6 are 36, into 6 it is 216. लेकिन यहाँ पर माइनस भी आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस will give us minus. So always remember, cubes of negative integers are negative. Next we have the number of zeros in a perfect cube ending with 0 is a multiple of 3. Let us take a number, say 40, and if we find its cube, we will get it 40 into 40 into 40. Now 4 cube is 64, and we have now 3 zeros, 1, 2, 3. So here the number of zeros is 3. Let us take another number. If we find 400 cube, then multiply 400 by itself 3 times. Power 3 means we have to multiply 400 by itself only 3 times, and this will give you 64. And how many zeros? 2 2 2, 6 zeros, and again 6 is a multiple of 3. तो आप देखेंगे कि एक perfect cube number में number of zeros क्या हो सकते हैं? 3 zeros can be there, 6 zeros can be there, 9 zeros can be there, but it cannot have 2 zeros or 4 zeros or say 5 zeros. And you will always see that these zeros, the number of zeros, it is a multiple of 3. I hope it is clear to you. So now always keep in mind, whenever we have a figure like this, 7 raised to power 3, what you have to do? You have to multiply 7 by itself 3 times, and this will give you 343. अगर आप सोच रहे हैं कि 7 raised to power 3 का मतलब है 7 into 3, then you are absolutely wrong. कई बच्चों के मन में ऐसा आता है कि 7 raised to power 3 मतलब 7 into 3, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है. इस सही मीनिंग को अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लीजिए. You will be using it again and again in future calculations. Next we have some interesting patterns. Pattern of sums of odd numbers. आप यहाँ पर देखिए एक एक करके. 1 cube is 1, and this is 1, an odd number. 2 cube is 8, and this is equal to 3 plus 5. 3 और 5 दोनों consecutive odd numbers हैं, और आप देखेंगे क्योंकि हम 2 cube निकाल रहे हैं, so we are taking only 2 odd numbers. Now we look at 3 cube. It is 27, and since we are taking the number 3, so this 27 we will get by adding 3 consecutive odd numbers, 7 plus 9 plus 11. अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 27 ही मिलेगा. तो हम जब 3 क्यूब ले रहे हैं तो 3 ऑड नंबर्स ले रहे हैं. यहाँ पर भी देखिए 3 plus 5 it's 8, तो 2 क्यूब ले रहे हैं तो 2 ऑड नंबर्स के सम से हमें ये मिल रहा है 8. यहाँ है 4 क्यूब, सिंस द नंबर इज 4, तो 4 ऑड नंबर्स को ऐड करने से हमें 64 मिल रहा है. सिमिलरली वी हैव 5 क्यूब और 5 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इनको ऐड करने से हमें मिल रहा है 5 क्यूब, दैट इज 125. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू गेट दिस बिगिनिंग नंबर. ये नंबर कैसे मिल रहा है? इसके बाद तो हम लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते जाएंगे और जितने नंबर का क्यूब ले रहे हैं उतने ऑड नंबर्स ले लेंगे. तो आप देखिए इसमें 21 और 5 में क्या कनेक्शन है. 5 into 4 plus 1 gives us 21, यानी 5 then 1 less and then plus 1. इसी तरह से 13 कैसे आ रहा है? 4 into 1 less, that is 3, and plus 1, हमें मिल रहा है फर्स्ट ऑड नंबर. हैव अ लुक एट दिस 7, this is equal to 3 cube, so 3 into 1 less plus 1, 3 2 is 6 plus 1 7,
तो हमें स्टार्टिंग नंबर कैसे मिल रहा है? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रेडिसेसर, वन लेस, and then plus 1. Got it? Now if we want to find 10 cube, then tell me how many odd numbers do we need to get 10 cube? And it is equal to 1000. You should learn this. You should be knowing this. How we will get it? We need 10 odd consecutive numbers. And from where to start? 10 into 1 less, that is 9, plus 1. This will be 91. तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा लेंगे हम? 91, और उसके बाद सक्सेसिव ऑड नंबर्स हम लेते जाएंगे. 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101, 103 प्लस 105 plus 107. How many we have written? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and one more. And you will see that after adding these numbers, it will be equal to 1000 and this is nothing but 10 cube. तो इस तरह से एक interesting pattern मिल गया हमें. When we add successive odd numbers, it is equal to the number we have taken, the number of odd numbers that we are taking, their sum is equal to that particular number's cube. So I hope it is clear to you. Next we have one thing very important, cubes and their prime factors. This is very important to understand. Each prime factor of a number appears 3 times in the prime factorization of its cube. Let us take one cube number and it is 216. ये लेते हैं और हमें पता है that it is equal to 6 into 6 into 6. Let us break this 6 into its prime factors. 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3. इस 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 into 3 और इस 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 into 3. Now write all the 2's together. It is coming 3 times and 3 is also there 3 times. So what is said here? Each prime factor of a number appears 3 times. तो आप देखिए 2 भी 3 times appear हो रहा है और 3 भी 3 times ही आ रहा है. तो जब भी हम एक क्यूब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में मिलेंगे हमें इन ग्रुप्स ऑफ 3. Here 2 is forming a group of 3, 3 is also forming a group of 3. And its converse is also true. In the prime factorization of any number, if each factor appears 3 times, then the number is a perfect cube. इसी तरह से अगर हम इसके रिवर्स में चलें कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में मिल रहे हैं, हमें ग्रुप्स ऑफ 3 में मिल रहे हैं, तो वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा. तो दोनों बातें ठीक है कि अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसके सभी प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में मिलेंगे, ग्रुप्स ऑफ 3 में मिलेंगे. और इसका रिवर्स क्या हो गया या कन्वर्स क्या हो गया कि इफ द प्राइम फैक्टर्स अपीयर इन ग्रुप्स ऑफ 3 देन दैट नंबर is a perfect cube. Got it? Let us take one number 72. If we write its prime factors, you will get it equal to 2 into 2 into 2 and then 3 into 3. Now have a look. ये 2 तो 3 के ग्रुप में हमें मिल रहा है, लेकिन क्या ये 3 ये भी 3 के ग्रुप में है? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर आप देखेंगे only 2 times 3 is there. The third 3 is missing. तो ये एक perfect cube number नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब. और ये क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि इसका एक प्राइम फैक्टर ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है. इट इज़ नॉट इन अ ग्रुप ऑफ 3, इसलिए 72 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. और हमारी डेफिनेशन भी तो यही है क्यूब नंबर की. वी गेट इट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है अपने आप से. It is not getting multiplied by itself 3 times. So, this resulting number is not a perfect cube. Got it? Now, this will be much more clear as we take the first example from your book. Is 243 a perfect cube? ये बताने के लिए कि ये perfect cube है या नहीं, we will find the prime factors of 243. So, we begin the solution.
we find the prime factors of 243. How we find it? Write the number, draw a vertical line, एक horizontal line. Now this is divisible by 3. You can add the numbers 2 and 4. It's 6 plus 3 9. So 9 comes in the table of 3 and so this number is divisible by 3. Just revise the divisibility rules also before you start this prime factorization. 3 8s are 24, 3 1s are 3. Then by 3, 3 2s are 6, 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, then 3 1s are 3. So let us write it. 243, it is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Now let us try to form the triplets. ये एक triplet तो हमें मिल गया. But what about this? This is not forming a triplet and we write here in the prime factorization three into 3 is left after grouping 3's in triplets. After forming the groups of 3, this 3 into 3 is left. Now is it a perfect cube? क्या ये number 243 एक perfect cube है? Just recall कि when the prime factors occur or appear in triplet form in groups of 3, only then that number is a perfect cube. अगर prime factors 3 3 के group में appear हो या आए तब वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है. पर अभी क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है इसलिए 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमें 243 मिले. इसका नेक्स्ट मीनिंग ये बनकर आता है. नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब. तो पहली चीज तो ये पूछिए कि क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं. इसका मतलब क्या इसके प्राइम फैक्टर्स 3 3 के ग्रुप्स में हैं या नहीं. अगर इसके प्राइम फैक्टर्स 3 3 के ग्रुप में होंगे तब तो ये एक परफेक्ट क्यूब होगा और अगर वो 3 3 के ग्रुप में नहीं होंगे, कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. गॉट इट? देन इट हैज़ बीन आस्क्ड कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिससे अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. सो फर्स्ट वी एनालाइज, is it a perfect cube or not? So we find the prime factors of 392. इससे शुरू करते हैं. Let us write the number 392. Draw a vertical line, a horizontal line. It is an even number, so it will go by 2. We start the division by 2. 2 1s are 2, 19. So 2 9s are 18 and 6 times 12. Then by 2, 2 9s are 18, 2 8s are 16. Again by 2, 2 4s are 8 and then we have 9 times 18. Now 49, it comes in the table of 7. So 7 7s are 49, 7 1s are 7. Let us write down the prime factors of 392. It's 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Now let us form the triplets. ये तो हमें ट्रिपलेट फॉर्म में बिल्कुल मिल रहा है इन ग्रुप्स ऑफ 3. ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 3 वी आर गेटिंग दिस प्राइम फैक्टर 2. बट व्हाट अबाउट 7? ये तो 2 टाइम्स ही आ रहा है. द थर्ड 7 इज मिसिंग. सो द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3 एंड सो 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है
क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 तो ट्रिपलेट फॉर्म में है, इन अ ग्रुप ऑफ 3 इट इज देयर, बट 7 is not in a group of 3, it is only 2 times here, and so 392 is not a perfect cube. ये याद रखिएगा, for a number to be a perfect cube, its prime factors should appear in groups of 3. Got it? Now the next part is find the smallest number by which it should be multiplied to get a perfect cube. तो यहाँ पर एक 7 मिसिंग है, अगर एक 7 और आ जाए तो 7 का भी ट्रिपलेट बन जाएगा. A group of 3 it will be there then. So one more 7 is required, and so we should multiply 392 by 7, and then it will become a perfect cube. Let us see here, to make it a perfect cube we need one more 7, and so we multiply 392 by 7. बात समझ में आ रही है कि हमें एक परफेक्ट क्यूब चाहिए, 392 से क्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए. तो यहाँ पर क्योंकि एक 7 मिसिंग है तो एक 7 से ही तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, एंड सो वी मल्टीप्लाई 392 बाय 7. और हम यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं 392 के वो एक बार फिर से लिख लेते हैं. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 392. तो 392 की जगह हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए और एक 7 और ला रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 7. और अब आप देखिए कि 2 के भी ग्रुप ऑफ 3 मिल रहा है हमें और 7 के लिए भी हमें ग्रुप ऑफ 3 मिल रहा है. बोथ आर इन ट्रिपलेट फॉर्म. एंड नाउ द नंबर दैट वी विल गेट, 7 2s are 14, 1 carried, it's 64, and we will get it 2744 or 2744 when we multiply 392 by 7. So 2744 is a perfect cube now. ये हो गया एक परफेक्ट क्यूब. क्यों हो रहा है ये परफेक्ट क्यूब? क्योंकि अब इसके फैक्टर्स देखिए आप, 2 भी और 7 भी दोनों ही ट्रिपलेट फॉर्म में हैं. दे बोथ आर इन ग्रुप्स ऑफ 3. सो 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, 7 इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. तो क्यूब की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है और ये एक परफेक्ट क्यूब है. हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 must be multiplied to make a perfect cube is 7. This is the final answer. Okay, we have one more example. Is 53,240 a perfect cube? फिर से यही पूछ रहे हैं कि क्या ये एक perfect cube है. तो हम फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और अगर सभी प्राइम फैक्टर्स 3 के ग्रुप में अपीयर होंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब है. और अगर वो 3 के ग्रुप में नहीं है, कोई भी एक फैक्टर मिसिंग है, तब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. देन इफ नॉट, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड दिस टाइम सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब. So first we solve the first part and then we will come to the second part. In the second part it has been asked कि अगर ये perfect cube नहीं है तो वो smallest natural number बताइए जिससे इसको divide करेंगे अगर, तो हमें एक perfect cube number मिल जाएगा. This is the question. So first we find the prime factors of 53,240. Let us find it. 53,240. Draw a vertical line. Now it is an even number. We begin with 2. 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 6 are 12, and here we have 20. Again by 2, 1 3 3 1 0. Again by 2, 2 6 are 12, 6 are 12, 5s are 10, 5s are 10. Now it's ending with 5. तो 5 से कर लेते हैं हम divide. 5 1s are 5. Then 5 3s are 15, 3s are 15, 1s are 5. Now this number, it is 11 cube. Remember 11 cube is 1331. इसे याद भी कर लीजिए आप. And so we should divide by 11 and it will come out to be 121. Again by 11, 11 11s are, because 121 is 11 square, and then 11 ones are. In this way we have written the prime factors of 53,240. Let us write them here also. We are having 2 into 2 into 2, then 5,
and then 11 into 11 into 11. So these are the prime factors of this given number, and let us now try to make groups of 3. 2, it is there in a group of 3. तो 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, 11 का भी एक ट्रिपलेट बन रहा है, but what about 5? 5 is not forming a triplet. So the prime factor 5 does not appear in a group of 3. और अब बताइए क्या ये नंबर 53,240 is it a perfect cube? No, it is not a perfect cube because one of its factors, it is not forming a group of 3. It is not getting multiplied by itself 3 times, and so 53,240 is not a perfect cube. I hope it is clear. Next we will solve the second part. By which smallest number should this be divided so that the quotient is a perfect cube? अब इस नंबर को किससे डिवाइड करें जिससे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए, जो रिजल्ट आएगा, क्वोशिएंट आएगा डिवीजन के बाद, वो एक परफेक्ट क्यूब हो. तो यहाँ आप देखिए ये जो 5 है ये एक एक्स्ट्रा नंबर है. अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, या कह लीजिए 5 विल बी एलिमिनेटेड, और तब हमें क्या मिलेगा? ओनली 2 इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट एंड ओनली 11 इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट. तो दोनों फैक्टर्स ट्रिपलेट में होंगे और तब हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा एक परफेक्ट क्यूब. तो अब हमें किससे डिवाइड करना चाहिए? टू गेट अ परफेक्ट क्यूब वी शुड डिवाइड बाय दिस एक्स्ट्रा नंबर 5. सो वी राइट हियर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी नीड 53,240. We need to divide this by 5, and let us now divide this number by 5. और हमारे फैक्टर्स क्या हैं? into 5 into 11, 11 and 11. इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, अब आप देखिए दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं. जो हमारे पास ये रिलेशन है इसमें हम LHS और RHS दोनों ही तरफ 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी और RHS को भी. तो आप देखिए ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया और क्या बच गया यहाँ पर? 2 इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट एंड 11 इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट. ठीक है, और यहाँ डिवाइड कीजिए आप. 5 1 ज़ 5, देन 0 6 टाइम्स 30, देन 24 4 टाइम्स and then 8 times. I hope you can easily divide, and now the number that we are getting is 10,648. और क्या ये एक perfect cube number है? क्योंकि हम divide किस लिए कर रहे हैं? We are dividing so that the quotient is a perfect cube. और इस केस में quotient ये हो गया divide करने पर. और क्या ये एक perfect cube है या नहीं? तो आप देखिए इसके factors triplet forms में है, दोनों की दोनों, और इसलिए ये एक perfect cube है. So 10,648 here is a perfect cube, and hence the smallest natural number by which 53,240 must be divided to make a perfect cube is 5. हमने 5 से डिवाइड किया और एक perfect cube हमें मिल गया. Then we have one more example. Is 1,188 a perfect cube? Again the same question. We will be finding the prime factors, और अगर सभी prime factors triplet form में होंगे तब ये एक perfect cube है, otherwise it is not. If not, by which smallest natural number should this number be divided so that the quotient is a perfect cube? So again the same question कि अगर ये एक perfect cube नहीं है तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसे हम इसको डिवाइड करें तब हमें एक perfect cube number मिल जाए. So we begin first by finding the prime factors of 1,188. Let us write down this number here. Draw the lines. It is an even number, so we start with 2. 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 4s are 8. Now you should be able to divide all this in your mind. If you are unable to do it, then you can use the rough work, rough paper, otherwise try to divide it directly. Then by 2, 2 2s are 4, 2 9s are 18,
2 sevens are 14. Now just add the digits. Is it divisible by 3? 9 and 7, 16, 17, 18. Yes, it's divisible by 3. तो हम 3 लेते हैं next number. 3 9s are 27. Again 9s are 27. 3 and 33. 3 here 11 and 11 ones are 11. 11 is a prime number. Now what? We write down the prime factors of 1188. This is equal to 2 into 2, and here we have 3 times 3, and then we have 11 in the end. Now what do you see? When we form the triplets, let us form it. We are getting only one triplet here. Neither 2 is forming a triplet nor 11. ना तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और ना ही 11 का. So the prime factors 2 and 11 do not appear in groups of 3. तो अब बताइए कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये 1188 इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. The definition of a cube number is that we get it when we multiply a number by itself 3 times. तो यहाँ पर 2 it is not getting multiplied by itself 3 times, and 11 is also not getting multiplied by itself 3 times. So it is not a perfect cube. Now we need to get a perfect cube by dividing this number by any other number, and what that number should be. आप देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, ये 2 और 11. क्योंकि इनके ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं तो ये नंबर्स एक्स्ट्रा नंबर्स हैं. अगर हम इन्हीं से डिवाइड कर दें तो ये तीनों नंबर्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और तब हमें मिलेगा सिर्फ 3 इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रिपलेट, और तब वो नंबर होगा एक परफेक्ट क्यूब. सो वी शुड डिवाइड दिस गिवन नंबर बाय 2 into 2 into 11. Let us write it. To make it a perfect cube, we need to divide 1188 by 2 into 2 into 11, and this is equal to 44. 2 2s are 4, 4 into 11 is 44. समझ में आए आप? यहाँ पर देखिए ये दोनों ही नंबर्स एक्स्ट्रा हैं और ये भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है, तो हम इन्हीं को तो रिमूव करना चाहते हैं, और डिवीजन से ये तीनों नंबर्स इजीली रिमूव हो जाएंगे. तो हम डिवाइड करने वाले हैं 44 से. So then if we divide it by 44, what do we get? Here we have 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 11, और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं 2 into 2 into 11 से, which is equal to 44. तो आप देखिए डिवाइड करने से ये नंबर्स कैंसिल हो गए, ये नंबर्स भी कैंसिल हो गए, और ये भी कैंसिल हो गया, और जो बच गया वो है 3 into 3 into 3, and this is a triplet. And when we divide this number by 44, we will get it equal to 27, which is actually 3 cube. और अब ये नंबर है perfect cube, as you can see, and then 27 is a perfect cube, and hence the smallest natural number by which 1188 must be divided to make a perfect cube is 44. This is the answer. We have one more example. Is 68,600 a perfect cube? If not, find the smallest number by which this should be multiplied to get a perfect cube. तो पहले तो हमें यही एग्जामिन करना है कि क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर ये नहीं है तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. सो वी बिगिन बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68,600. Let us write down the number. वैसे तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस देखकर भी बता सकते हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. ओनली 2 zeros आर देयर एंड द नंबर्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, हम ये देखते ही बता सकते हैं. स्टिल वी नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स सो दैट वी कैन स्टडी इट इन दैट वे ऑल्सो. बिगिन विद 2.
2 3s are 6, 2 4s are 8, 3s are 6, 00. Again by 2, 1 7 1 5 0. Again by 2, 8s are 16, 5s are 10, 7s are 14, 5s are 10. Now it is ending with 5. So let us divide by 5, or shall we check the divisibility by 3? Let us check it. 8 and 7 15, and then we have 10 25. It's not divisible by 3. We take 5. 5 ones are 5, 7s are 35, 1s are 5, 5s are 25. Again by 5. 3s are 15, 4s are 20, 3s are 15. 343. अब ये आपको याद होना चाहिए. It is 7 cube. So we divide it by 7. It will go 49 times, and 7 7s are 49, 7 1s are 7. With this we get the prime factors of 68,600. We can write them. Here we have 2, then we have 5, and then we have 7. As you can see, 5 is there only 2 times. Let us form the triplets. 3 times, 3 times. But 5 is not there in the form of a triplet. 5 is not forming a group of 3. And so, is it a perfect cube? Obviously not. The prime factor 5 does not appear in a group of 3. And so, 68,600 is not a perfect cube. I hope it is clear. Next we have been asked by which number it should be multiplied. तो आप देखिए यहाँ पर 5 is occurring 2 times. 2 बार आ रहा है 5, और ट्रिपलेट लाने के लिए हमें एक 5 की और ज़रूरत है. So we should multiply this number by 5. Yes. To make it a perfect cube, we need one more 5. So we multiply 68,600 by 5. And let us multiply by 5, and let us multiply the factors also. इसकी जगह हम इसके factors लिख लेते हैं यहाँ पर. It will be 2 into 2 into 2, 5 into 5, and we are now bringing one more 5. तो इस 5 को लास्ट में लिखने की जगह हम 5 के साथ ही लिख लेते हैं, और साथ में हमारे पास है 3 times 7. और अब आप देखिए, when we form the triplets, all the 3 factors are in the form of triplets, and if we multiply we get the answer as 00, 5 6 are 30, 3 carried, 5 8s are 40, and it will be 43, 4 carried, 5 6 are 30, and it will be 34. So it's 3,43,000. And is it a perfect cube? Yes, it is a perfect cube. आप देखिए 2 3 times है, 5 भी 3 times है, और 7 भी 3 times है. और क्या आप बता सकते हैं कि ये किसका क्यूब है? Just have a look. 343 is a cube of 7, and here we have 3 zeros. So 1000 is a cube of 10. So 70 cube is equal to 343 and 000. It is equal to 70 cube. So this number is a perfect cube. ये एक perfect cube है, and hence the smallest natural number by which 68,600 must be multiplied to make a perfect cube is 5. So with this we complete these examples. I hope all this is very much clear and interesting for you. Practice these questions and try to do the questions of exercise 7.1 on your own. Soon we will meet again. Till then, goodbye.